Good morning students. Myself is Krishandra Sahu, Department of Electrical Engineering, BOS Kotak Odisha. So last class आमे discussion करथिले block diagram reduction. Block diagram reduction ले rules आमे discussion करथिले. आज मु तुम मानको किछि problem करेबी regarding block diagram reduction. केमति देखो means the today topic is simple problem solution overall or equivalent transfer function by block diagram reduction. Means गोटे complex structure थिबो block diagram रे प्रत्येक ब्लॉक रे ट्रांसफर फंक्शन थिबो आमे बाहर करबा व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन. लास्ट क्लास रे जो आमे 10टा रूल पढ़थिले बाय यूजिंग दिस 10 रूल्स वी फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम where the number of blocks are present there. So that's why I'm solving some numericals here, some problems I'm solve here. So you see, so this is the problem here. So here is a problem here, you see, derive the transfer function using block reduction technique. So this is a problem here. Here you see, here contains 1 to 5 blocks are here, 3 summing points are there. Means the block G1 is the transfer function of that block, H1 is also transfer function, S3 is a transfer function, G2, H2 are the transfer function of different blocks, individual blocks. But our target is to find the overall transfer function. Or we find the derive the transfer function means overall equivalent transfer function. So to the system you see, so what is the input signal? RS. What the output signal? CS. System input signal पिला माने कोन? RS. Output signal कोन पिला माने CS. तो Laplace transform हम बाहर करिया पई. So what is the transfer function? आमे जानि छु transfer function is equal to which is equal to Laplace of output signal CS by Laplace of output signal, that is output signal, and Laplace of input signal RS or CS by RS. Output signal and input signal here Laplace form, so CS by RS is called as a transfer function. आमे transfer function बाहरिबा जदि आमे block diagram को this complex diagram is convert into a single block diagram. जदि आमे single block diagram करि परिबा, if it is a single block diagram, you see this is the RS input and this is the CS input. इस माने बहुत गुडे ब्लॉक अच्छी दिस कॉम्प्लेक्स पिक्चर रे आमे ता रिडक्शन मेथड रे मु सिंगल ट्रांसफर फंक्शन कर देबी कन्वर्टिंग ए सिंगल ब्लॉक ऑल आर कन्वर्टिंग इन ए सिंगल ब्लॉक एंड दैट ब्लॉक वैल्यू इज लेट हियर ब्लॉक वैल्यू इज लेट GS. ओके देन फॉर a single block what is the transfer function? CS by RS is equal to block value. For single block you see for single block CS by RS is equal to GS, that is the transfer function value. Okay, that's why complex structure जोटी बहुत गुटे block summing point अच्छी आमे तो convert कर देबा गुटे single block को. That method utilization here is called block reduction method technique. So you see here, so I'll solve this numerical. So I solve this numerical, you see, this is the numerical. Here what happens, you look just here, this is this G1 H1 is forming a closed loop, because I told you last class for closed loop, for the transfer function, closed loop transfer function is equal to GS by 1 plus GS into HS. If here is a closed loop is here, this is closed loop here, a block value is here, this value is GS, this is a summing point, this feedback is HS, this feedback is HS here, plus minus this case. So what is the input? RS, what the output? CS here. So here for this closed loop system, the transfer function CS by RS by RS, this transfer function is equal to how much? GS by 1 plus GS into HS, because here the feedback is a negative feedback. If HS is a negative feedback signal, HS feedback signal negative sign. So if a negative sign, that is a plus, 1 plus. If it is a positive signal, then 1 minus. Last class I have derived closed loop system transfer function. Means this closed loop can be replaced by a single block whose transfer function like that. A closed loop को उठे दे पारिबी गोटे सिंगल ब्लॉक करि पारिबी से सिंगल ब्लॉक रो ट्रांसफर मींस ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. दिस इज कॉल्ड लास्ट क्लास आई टोल्ड यू
This is called closed loop transfer, CLTF, closed loop transfer function. Closed loop transfer how much? GS by forward path transfer function GS by 1 plus GS into HS. HS is a feedback path transfer function. Last class I have discussed these things. Okay, you see here. So now this problem I will solve and reduce by reduction method. I solve this block diagram to a single block diagram by reduction method by using the different rules are there. Last class I have told you 10 rules. By using these rules which is applicable here, I just solve here. So solution 1, I just write step 1, you see. So when this block reduction method is solved, means you problem solved by block reduction method. So for solving this problem, different steps you take. Step 1, step 2, step 2. Each step you reduce the blocks. Block manako pratek step re kame kame jiba by using the 10 rules. So step 1 you see. Here this is one closed loop, second loop, two closed loop here. So as two closed loop here, dita puni closed loop ka hame remove kari pariba. We eliminate the closed loop by their transfer function value. Means step 1 mu lekhibi remove closed loops. So I remove the closed loops by transfer function value. So this is first closed loop, it becomes a transfer function. Second closed loop, it becomes a transfer. Because you see a plus minus, if a closed loop, not a forward loop. Closed loop means signal going forward direction, it written by the negative direction. So goes forward, so it is a closed loop. Here two closed loop are here. So just remove the closed loop by their transfer function block. Okay, means for the figure like that here you see. First closed loop function is a block. Second one also block here you see. Second closed loop block here. What is the first closed loop function value? What is the transfer function value here? This value is G1 by, this value you see here. This G1 by, GS by 1 plus GS into HS. G1 by 1 plus G1 into HN. This closed loop is replaced by, this closed loop, first closed loop replaced by a transfer function whose value is G1 by 1 plus G1 into H1. Similarly, second closed loop, what is the block transfer value? Second closed loop is equal to see G2 by forward path function by 1 plus forward path feedback G2 into H2. So for the output here, output is CS. For the input here, input is using a summing point here. Input is how much? RS here. Okay, so summing point value, summing point is plus minus here. So what is the feedback value? So feedback is H3 here. Feedback is H3. Means you see, this given question is converted to this format by removing of a closed loop system. So if you remove the closed loop, also remove closed loop, आमे 10 टा रूल भीतर remove closed loop थिला, elimination loop थिला पिला माने elimination loop. Elimination loop रे, so आमे एटा closed loop थिला, ता गुठे गुटे block value हेगला. By this closed loop, block value. Closed loop रो transfer function टा गुटे block value करके से block रे put कर दबो. Here is a closed loop transfer function find. First loop G1 by 1 plus G1 H1. तेणु प्रथम क्लोज लूप आम उठे देकी गोटे ब्लॉक पुट करवा ब्लॉक वैल्यू हूँ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू सिमिलरली सेकेंड क्लोज लूप उठे देबा गोटे ब्लॉक पुट करवा से ब्लॉक भीतर रखा से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू सो नाउ यू सी दिस टू ब्लॉक्स जो मेन पाथ इन द मेन पाथ टू ब्लॉक्स आर फॉरवर्ड पाथ दिस इज टॉप पाथ इज फॉरवर्ड पाथ बैक पाथ इज फीडबैक पाथ forward path first one is a forward path so bottom one is a feedback path you see here so here you see now this in this block diagram the forward path two blocks are cascade this first block second block in the forward path two blocks are cascade connection back to back connection cascade means they are multiply simple I have told you in the rule 1 cascade means they are multiply so step 2 I am writing here two blocks are cascaded two blocks are cascade so dita block बर्तमान cascade अछि तेना हम प्रथम रूल cascade रूल जाई दीटा ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर दबा गोटे ब्लॉक हे जिवो जार ट्रांसफर फंक्शन हेबो दीटा इंडिविजुअल ब्लॉक रो ट्रांसपोजिशन वैल्यू प्रोडक्ट ओके सो सी हियर so it becomes a single value single block for the input
आउटपुट इज CS, इनपुट गोटे समिंग पॉइंट लगी पे मैंने here summing point here for the input value RS here, okay, so plus minus here feedback signal. So for the feedback transfer function is H3, so it is connecting to the feedback. So what is the block value? Kind forward path रे दीटा block cascade connection हमें multiply कर देबा. So multiply कले ता numerator multiply देबो लब multiply G1 into G2, numerator multiply हो G1 into G2 by तार हर multiply हो denominator multiply 1 plus G1 H1 by 1 plus G2 H2. Okay, so now you see, so it is a simple closed loop system. So this is GS forward path, this is HS, a simple loop, simple closed loop system. I have told you the simple closed loop system model, this is GS, this is HS, okay, this is RS, this one plus minus समिंग पॉइंट भीतर देले चलिबो बाहर देले चलिबो, ओके, प्लस माइनस भीतर दे पार ना बाहर दे पार. सो दिस इज ए क्लोज लूप, ओके, इट फॉरवर्ड पाथ केते फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन फॉरवर्ड पाथ GS, फीडबैक पाथ HS. पिला माने GS को कहंती फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, HS को कहंती HS इज कॉल्ड फंक्शन, HS इज कॉल्ड एज फीडबैक पाथ ट्रांसफर function. This is HS here. Okay, this is a closed loop system. Similarly, step 2 रे जो बर्तन हम पहुंचला हमें step 2 रे देख step 2 रे closed loop है. There GS value is how much? G1 G2 by 1 plus G1 H1 into 1 plus G2 H2. What is the HS value? HS value H3 simple. So it is a closed loop system. ना बर्तन हम step 3 रे एक closed loop eliminate कर देबी गोटे block रे. By using closed loop elimination, this closed loop is eliminated or removed and to become a single block. Can a closed loop रे बाहर कर देबे transfer function value जहाँ closed loop transfer value. What is closed loop transfer function value? GS by 1 plus GS into HS. से रूल रे बर्तमान एक क्लोज लूप रे मु ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू बाहर करबी ताको रिप्लेस करे खाली गोटे ब्लॉक कर देबी. से ब्लॉक भितर से क्लोज लूप रो ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू मु पुट कर देबी. तेणु मु स्टेप 3 कौन करी. यू सी व्हाट इज द स्टेप 3 हियर. व्हाट इज माय स्टेप 3? लुक हियर स्टेप 3 हियर. सो व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 कौन करे पे माने स्टेप 2 बर्तन सरला क्लोज लूप अछि मु लिखमी रिमूव लिखि पार बा एलिमिनेशन लिखि पार. मु लिखु एलिमिनेशन लिखि पार और रिमूव को लिखि पार. रिमूव ऑफ क्लोज लूप बाय ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू बाय ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू. तो रिमूव करिवो ताको ता ट्रांस गोटे ब्लॉक कर दबो ए ब्लॉक रो ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू. सो टेल मी हियर GS ला दिस मच HS दिस मच ब्लॉक रे. सो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू? then बर्तमान एई ब्लॉक टा जो क्लोज लूप टा मुठे गोटे सिंगल ब्लॉक कर देबी. इट बिकम्स अ सिंगल ब्लॉक. क्लोज लूप बिकम सिंगल ब्लॉक. पे माने समिंग पॉइंट लागि छ बोधे समिंग पॉइंट नाही समिंग पॉइंट उठी गला क्लोज लूप उठी गला माने क्लोज लूप फॉरवर्ड ब्लॉक फीडबैक ब्लॉक सब उठी जीवो. सब उठी जाई कोन हे पे माने गोटिए ब्लॉक हे जीवो. यू सी हियर इज वन ब्लॉक हियर, वन ब्लॉक वैल्यू इज हियर. Okay, so what is the input signal? Input signal is RS. For the output signal is CS. किंतु आमे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू बाहर करबा केते बाय द फार्मूला GS दिस फार्मूला. आमे क्लोज लूप किंतु बाहर करबा क्लोज लूप ट्रांसफर वैल्यू में देखो तमे जानि छ क्लोज लूप ट्रांसफर वैल्यू कोन GS by 1 plus GS into HS. पे GS टा कोन फॉरवर्ड पाथ रे जाथिबो HS टा कौन फीडबैक पाथ जा देख ये GS के अच्छी GS अच्छी G1 G2 by
1 plus G1 H1 into 1 plus G2 H2. Okay, it has GS value. HS value and तले कौन रहिबो हटि द तले पार्ट कौन रहिबो तले माने पिला इज इक्वल टू के तले रहिबो 1 plus GS जहाँ रहला GS से G1 G2 by 1 plus G1 H1 into 1 plus G2 H2 गुणन पिलाने केते रहिबो H3 HS बा हमरा HS केते फिगर H3 एटा को सिंपलीफिकेशन कर दिबे सिंपलीफिकेशन कला पर से बेल्टा ब्लॉक रे पुट कर दो यू सिंपलीफाई हियर व्हाट इज द वैल्यू हियर सिंपलीफाई जस्ट दिस इज इक्वल टू एटा सिंपलीफिकेशन केते का पिला देखो ऊपर केते रहबो देखो ऊपर रहबो G1 G2 ता तळे केते रहबो एटा मल्टीप्लाई कर दियो ओके जहाँ से था 1 plus G1 H1 G1 how much it is equal to 1 plus G1 H1 into 1 plus G2 H2 ऊपर तले केते अछि पिला माने तळटा मल्टीप्लाई जो लॉस को एलसीएम केते जबो 1 plus G1 H1 into 1 plus G2 H2 ओके पिला माने ता तले इन ऊपर H3 G1 G2 H3 ऊपर मल्टीप्लाई जबो लबर अछि G1 G2 H3 G1 G2 H3 तले केते रहबो त तले अछि 1 plus G1 H1 into 1 plus G2 H2 ओके ए तले तले कटि जबो ओके कटिला पर केते रहबो फॉर द फाइनली व्हिच इज इक्वल टू okay a solution time you coming to right to left so what is the value रहबो ऊपर केते रहबो G1 G2 तळे केते रहबो पिला माने ए तो कटि गेला हर कटि गेला लबर केते अछि एटा मल्टीप्लाई कर दे जे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दबा मल्टीप्लाई केते दबो 1 टा गुणी दे एठी 1 मल्टीप्लाई हियर 1 plus G2 H2 G1 H1 मल्टीप्लाई कले G1 H1 plus G1 H1 G2 H2 plus G1 G3 H3 ओके ताको टे सिंपलीफिकेशन केते पिला हबो G1 G2 by how much here G1 G2 division by 1 plus G1 H1 plus G2 H2 plus G3 G1 G3 H3 पिलाने तले एमते एक्सप्रेशन करिवो यू रिमेंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर करिवो सब एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल लिखुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट गोटे 1 तापर G1 H1 तापर तीनटिया टर्म तापर चारटिया टर्म व्हाट इज वैल्यू G1 G2 H1 H2 this is the transfer function value finally and that value this value you just put here this value you put in the block then block bhitar kete pailo G1 G2 by 1 plus G1 H1 plus G2 H2 plus G1 G3 how much here G1 G2 this is G1 G2 just modify here 1 plus G1 H1 G1 G2 this is how much this is equal to G1 G2 H3 G1 G2 H1 H2 okay. So put the value here
G1 G2 H3 G1 G2 H3 plus G1 G2 H1 H2. Okay, so now the total blocks are converting into a single block. You see, total blocks are converting into a single block. You see, so what is the transfer function value? Step 4. For the transfer function value, so determine the transfer function, overall transfer function, overall transfer function CS by RS how much, output signal by input signal how much, the block value single block, gote single block thile output signal by input signal is equal to block value. So that is equal to G1 G2 by 1 plus G1 H1 G2 H2 plus G1 G2 H3 plus G1 G2 H1 H2. That is the answer. You find the answer. So this is overall transfer function. This is the transfer function value. Overall transfer function means you see many blocks are there, many blocks are connected in different types, series, cascade or series connection or a closed loop. You just reduce into a single block. बहुत गुटे ब्लॉक था आम सिंगल ब्लॉक करदे. दैट मेथड इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड. ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड आम कौन करती बहुत गुटे ब्लॉक जो थी आम तो कन्वर्ट कर सिंगल ब्लॉक और सिंगल ब्लॉक भैल्यूटा हूँ ट्रांसफर फंक्शन भैल्यू इजिली पाइबा कहीं आउटपुट बाय इनपुट हूँ के ब्लॉक भैल्यू. आउटपुट बाय इनपुटा पे लाप्लास आउटपुट बाय आउटपुट सिग्नल लाप्लास बाय इनपुट सिग्नल लाप्लास इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर फंक्शन. तेना ब्लॉक गोटे ब्लॉक और ट्रांसफर फंक्शन भैल्यू हूँ लाप्लास ऑफ आउटपुट CS बाय इनपुट लाप्लास RS एवं दैट इज द ब्लॉक भैल्यू. बिकॉज मुझे तुमको लास्ट क्लास कहते सिंगल ब्लॉक इनपुट सिग्नल इंटू ब्लॉक भैल्यू इज इक्वल टू CS, RS इंटू ब्लॉक भैल्यू इज CS, ताले CS बाय RS केते ब्लॉक भैल्यू. दैट ब्लॉक भैल्यू इज कंटेन द ट्रांसफर फंक्शन. बर्तमान गोटे सिंगल ब्लॉक अच्छी सिंगल ब्लॉक भितर कौन रहे पे ट्रांसफर फंक्शन. दैट ब्लॉक भैल्यू इज इक्वल टू दिस ब्लॉक